Okay. Good morning and welcome. Just a moment. Definitely something that you have asked after 12th, along with your studies, if you want to work with any NGO, will it affect my studies in any ways? No. No, it will not affect your studies in any ways as long as you follow a particular pattern of prioritizing your studies and managing your everything around your two commitments, NGO and your education. NGO, education and everything else is to be planned around it. So you need to be very organized and planned to do what you are thinking of achieving. It is very much possible. I am doing multiple profession even right now. I am having two online businesses. Okay, education related, counseling related, training related, online. One is having affiliate model, as you say, work from home model, where independent people can start earning a lot of money. And also I'm doing my online, I have got my online career guidance portal where I have got associates who use my services. I have got co-branding partners who use my services for branding their reports, branding my reports in their brand. I'm giving that kind of opportunity, and I'm doing my online sessions and personal counselings. So multiple, but my priorities is my seminars. When I have given my commitment to the seminar, I stick to that, and everything around that I manage. I don't overcommit. I always undercommit and over deliver. If you have understood the kind of work we did last 2 hours, and now you will understand in the next 2 hours, 1.5 to 2 hours, right? So it is all about your clarity कि भाई ये 2 घंटे मुझे यहाँ बैठ के I have to talk to these children, these 9 children who are there in this seminar. My commitment is to these 9 children. I'm not worried about why the others did not join. I'm not worried about that at all. If there were 2 people, I told you, you were only 2 people at that time in the beginning. I said that this session is not getting cancelled because I have given 2 hours for this, right? And it was decided till yesterday that this session is cancelled, and it was amalgamated with yesterday's career guidance session. But then I saw that there were few people who registered tonight, last night, sorry. I said that no, that is, if it is registrations have come, I have to do the session. So I took out the 2 hours, and that is why I asked sir also. So this is called prioritizing, planning, under commit, over deliver. Under commit, over deliver. You will never be a failure in your life. And always go where your values are. Okay. I failed in one business because I was not able to follow certain things because of my value system. So if there is a conflicting value, if you are going to compromise your value, it is going to be very difficult to live with that. Okay. So thank you and joining on this session. These 9 people have trusted me with their 1.5 hours. I'm going to make it worthwhile for you to best of my ability. So welcome to the session for career guidance with me. Symphony is the name of my organization. I welcome you on behalf of Matrix Academy. I believe the teachers are not there. So I thank the Matrix Academy for creating this session and letting this link go to the group. Otherwise, this session would not have materialized today. Sooner or later, you may have joined any of the other career guidance sessions. So I really thank Jaya ma'am, Seema ma'am, Jayanti ma'am, and all the teaching and non-teaching staff. And I have been associated with Matrix Academy for quite some time. Probably I will not be billing them for this session, right? Because according to them, it was amalgamated, but since you registered, it is my value which doesn't let me let you down. Okay, so thanks for joining, and thanks to Matrix Academy, we are together. Let's carry on. And yes, I run this institute called Symphony,
which is based on the science of design of human beings, which addresses being part of human being. There are no dog beings, cat beings, but human beings. The language, the thoughts, the relationships, articulation of your thoughts. That is the difference between we and the other animals. We are social animals. There is no other social animal on this planet. So we are slightly different. So that part, what allows us to be different, that is my area of interest and that is my area of research. And that allows me to work with attitude, behavior, and character building and confidence building. Confidence, character, and attitude are directly not tangible. They need to be developed. They need to be, and they can go off anytime. So they have to be sustained. So that is the major effort that I have been putting in to sustain the attitude, behavior, character not as in characterless wala character. It's all a very subjective and objective thing. Personal choices. I will never judge a person who is having a live-in relationship or a live-out relationship or multiple relationships. That's his choice. He didn't come and ask me whether he should do it or not. Even if anybody comes and asks me, I said that there are consequences, you be ready to bear the consequences. So I'm not going to put my opinions on anybody. So that is the science of design of human beings, that when I am allowing other person to have freedom to express themselves, I am able to have authentic one-to-one conversations, one-to-many conversations. I enjoy doing that because the person can trust me to be unbiased regardless of my personal opinion about non-vegetarian food, non-Jain food. I am a pure Jain person, but if you are talking about having a chicken burger, I have no problem, right? It is your personal choice, right? I am not a preacher. So that is how I am. I am a teetotaler and I'm okay, right? I'm okay in a party when there is a cocktail party. I'm okay holding a cold drink. Nowadays, I don't even go to cocktail parties and not even go to a restaurant where the alcohol is served because I'm working with teenagers. They identify me as a role model at times and they may say, Paresh sir, cigarette पीते तो अच्छा है, दारू पीते तो अच्छा है, पी सकते हैं. I have not touched it, so I don't even go there. तो लोगों के दिमाग में डाउट भी नहीं आना चाहिए परेश भाई बाहर से बाहर निकले थे. That is called image management, being appropriate about what you want people to relate to you as. That is the career guidance ka lesson number 1. You are responsible for what people are thinking about you. And if you don't want to take a responsibility, people can think anything about you and then you have no right to complain. You have not been responsible enough to be appropriate in your behavioral pattern. I hope I am connecting with you. You're all 12th standard students, so you may be able to connect with it. So it is that way, right? And it is absolutely appropriate and a very, very important, I'll tell you. I will open the chatting for everyone at the meeting. Okay, chat message maybe मैं थोड़ा डाल देता हूँ because now you know me, all of you know me, so it's better to allow everybody to chat. एक मिनट, everyone publicly. Okay, you can either message me personally or publicly also. Okay, so being part of human being has been always intriguing for me and I'm working on it very vehemently so that I can make it easily accessible as a practical, effective tool to succeed, to excel in life, happiness, satisfaction, and success in that order. Now, essence of career guidance. Career guidance is like a Google map of your life. It is useful at every juncture of your life. Every juncture. Career guidance is not just career choice. Career guidance is not just making the right choice. It is also making the choice right till the end of your life because you are going to leave that career for the rest of your life. अब वही career में जीने वाले हो. 10 to 12 hours in a day you are spending either thinking about your profession or actually acting in your profession out of 24 hours. 10 to 12 hours on profession, 10 hours on your body machine, that is sleeping,
toilet, bathroom, wash basin. My career guidance session is on. He just started. He's also there. So I'm fine. Absolutely. Just a moment. I'll just mute. Unplanned session. I'm sorry. Yeah. My family was not informed. Work from home ka hazard hai ye. Okay, so career guidance is very useful, is useful at every juncture of life. Career guidance is not just about making the choice, making the right choice. It is also about making the choice right for the rest of your life, even when you are studying, even when you are practicing. So better not to do any U-turn and take a bifurcation unless and until it is an emergency. I got into the profession of counseling and training. Rather than counseling, I would say coaching and training at the age of 26, 27 years back. I'm 53 right now. If I had made the right choice at the age of 15 or 17, I would have had a 8-year head start, right? But I am saying that it was a U-turn which was apt because I was enjoying. एक मिनट, जितेश सर का फोन आ रहा है. Okay, I'll talk to you later. Yeah, talk to them later. Okay. Some other school principal is calling me up. I'm sorry, there has been disturbance. I will put the mobile ulta so that no disturbance. Etiquette, netiquette. ये वो हो गया ना, unscheduled. करना है कि नहीं करना है वो question mark था, तो people knew that I was busy till 11, so they did not bother at that time. I'm extremely sorry for these distractions. Okay, coming back to, so challenges came in, opportunities came in. I took a U-turn, but I did my training and my current job as a backup plan, current work as a backup plan. Till the time I was very clear, I don't have any problem with focusing on my training programs. And then I slowly phased out my other activities. So you have to do that. So I had to do a U-turn, completely different profession altogether. Are you getting what I'm telling you? So career guidance is useful at every juncture of life. The things are changing, the jobs are changing, work is changing. अभी कुछ है, बाद में कुछ और होगा, 2 साल के बाद में कुछ और आएगा. मतलब गेम्स में भी वैसे है, पबजी के बाद में टबजी आएगा, टबजी के बाद में सब्जी आएगा. बहुत खेलोगे तो सब्जी खाने को नहीं मिलेगा, कमाना तो पड़ेगा. So the point is, the things will change. You need to be adapting to the new normal every time. You have got this experience of adapting to the new normal in 1.5 years, which मुझे 53 years में नहीं मिला था. उतना experience आपको 1.5 साल में मिल गया. You are richer by experience. The kind of experience you have had, you've grown beyond your ages. 1.5 साल में 100 साल का maturity आ गया है आप में, और impact बहुत पड़ा है, मैं मानता हूँ. You will have to work on it. If you are attached with us, if you get attached with us for Score More program, you will definitely get maximum out of this change management system, and you will be able to adapt to new normal very quickly. So career guidance and career choice, and see within the career also there are inner engineering. वो engineering, वो job change होती है, requirement change होती है. I'm a trainer, but now I'm a digital trainer. Okay, I'm not yet
putting my videos online. I'm not putting anything online. I don't know how to go about it, whether to go about it or not. Because my sessions are totally different than motivation sessions and all that. But let me check whether I can do that or not. Digital marketing अभी किया नहीं है. No problem, करेंगे. अभी तो 47 years yet to go. So engineering हो रहा है मेरे करियर में. भले ट्रेनर हूँ, लेकिन ट्रेनर का प्रोफाइल चेंज हो रहा है परेश भाई का. तो वो चेंज मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा. एवरी जंक्चर यू विल हैव टू, जैसे आफ्टर 40 you have to keep doing your pathology test on regular basis so that you know whether you are fit or on the verge of any problem, so you can do prevention rather than waiting for something to go wrong. So preventive checkup होता है, health checkup. वैसे ही preventive career checkup करना चाहिए on regular basis. Once a year you should go for career counseling, career assessment, if not counseling. At least अपना assessment कर लो, then you check out what next you have to do, where exactly you have developed. So career guidance is useful at every juncture of life. Essence of career guidance, two things: career in life and life in career. Both are interconnected. Career in life and life in career, both are interconnected. Okay. Because 10 to 12 hours in your life, daily life, you are going to be awake. 10 hours to manage your machine called body. 4 hours for your social life and spiritual life. Technically देखा जाए तो 10 and 4. So it is going to impact. If your career में आप peaceful हो, happy हो, तो आपका social and spiritual life भी काफी peaceful and happy होगा और काफी effective होगा. Making the right choice, making the choice right, and living the choice for the rest of life with happiness, satisfaction, and success. To summarize what we started with, choices for life. What will you want to do for the rest of your life? Not just for studying, or not just what you like to study, but what will motivate you daily for the rest of your life. What will make you happy daily for the rest of your life. Choice is not what you like to study or not like to study. That is 8 to 10 years. You may do something that you don't like right now so that you can achieve what you like and what you can do for the rest of your life. और क्या क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए? Skills and abilities and your willingness to develop them, and your willingness to accept that you are not that able in that particular area. Either you develop or you give up. फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली प्रेशर को आप छोटा मोटा मत समझे, सोशल प्रेशर को आप छोटा मोटा मत समझे, कल्चरल प्रेशर को छोटा मोटा मत समझे. जेंडर सेंसिटिविटी में बोल रहा हूँ, बायस नहीं बोल रहा हूँ. मैं फूड हैबिट्स की सेंसिटिविटी में हूँ, जेंडर में तो मैं बहुत बड़ा अनबायस्ड पर्सन हूँ. If a girl wants to be a pilot, she should be allowed to become a pilot. But girl has to be sensitive. I have to be sensitive to the family background. She cannot be a rebel and do what she wants to do. The parents' alignment is important. We have been able to achieve that all the time. Personality of the person. Family में business है, professional है, job है. Financial situation of the family also is to be taken into consideration. Cultural background. शादी कभी होने वाली है, right? सो वो सब तैयारी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में. नहीं तो बच्चे को रोज रोज बोलेंगे, अरे यार तू क्या पढ़ रहा है, अरे यार तू क्या पढ़ रही है, अच्छी अच्छी लड़कियां की शादी हो रही है, अभी तेरी पढ़ाई में से तो ऊपर ही नहीं आ रहा है, अच्छे अच्छे लड़के की शादी हो रही है. या शादी का मार्केट बहुत जोर में चल रहा है, एज एंड वो सब प्रैक्टिकल हमें मम्मी पापा का अलाइनमेंट करके करेंगे तो मम्मी पापा ही आपके फ्रंटलाइन वॉरियर बन जाएंगे. कोई आपको परेशान करने के लिए तैयार नहीं होगा. Interest quotient, emotional quotient, your capability to handle the emotional ups and downs. Motivation quotient अगर नहीं है तो डेवलप करना पड़ेंगे ये क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चन है: इमोशनल, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस. तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके करियर चॉइस करनी चाहिए. नॉट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर डूइंग इट, नॉट बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट, नॉट बिकॉज यू लाइक टू स्टडी, not because you always wanted to become that, not because your parents are telling you, not because your teachers have told you, not because the role model uncle is an architect, you want to be an architect. You need to be sensitive to your background.
making the right choice is like going to a multi-cuisine restaurant, as I was talking about it in the score mode program. But there are few people, multi-cuisine restaurant में जाओगे और पाव भाजी खाने का ऑर्डर करना है, प्री डिटरमिन्ड चॉइस कर दी, पाव भाजी अच्छी है, लेकिन जैसे ही दूसरे टेबल पे कुछ आया, मैक्सिकन आया या तो साउथ इंडियन आया, आपको लगे अरे यार इट लुक्स सो डिलीशियस, शायद पाव भाजी पार्सल करा लो, 1000 रुपये का खर्चा हो गया. एटलीस्ट there is not a big U-turn, but when you are talking about getting into a profession where you have to repeat certain things, like at the 26 years of age, I changed my profession, a lot of teething problems, right? So, and a lot of backlog, because there are people, I'm a fresher at the age of 26, and there is a fresher at the age of 18, 19, 20, 21. The person who is more knowledgeable about the process than I am is very much, way much junior to me. I have more responsibilities. That person is lightweight. So that person is getting more and more experience. So my age group people are much better than me, were much better than me at that time. I had to put in double the efforts, right? But अगर मैंने पहले career counseling किया होता, I would have been knowing that this is the wrong choice. I know the basis of my choice was my family background. Yeah, I was influenced by what my brother did. Nobody influenced me, but my thought processes influenced me. I was a role model. He was a role model for me. I was just following to be better than him, right? But he is a science person. He is a PhD from IIT Mumbai. मेरा temperament BSc तक क्या ही था, right? और अगर मैं पहले से कॉमर्स या आर्ट्स में जाता, साइकोलॉजी करता, better late than never. Cut the loss. I got into this profession and gave my 100%, and here I am, associated with about 300 institutes till now. So better is if you choose the dish after looking at the full menu. इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के पास जाते हो, हेल्थ के लिए मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हो, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस प्रोफेशनल, कार रिपेयर के लिए मैकेनिक, कार रिपेयर मैकेनिक से ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर होते हैं, तो भी आप कार के लिए तो मैकेनिक के पास जाते हो, बिकॉज ही इज अ स्पेशलिस्ट, सो यू गो टू अ स्पेशलिस्ट, राइट? कंप्यूटर परचेज के लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल के पास जाओगे, मोबाइल के लिए मोबाइल की गैलरी में जाओगे, दाना वाले के पास नहीं जाओगे. यू मे टेक एन ओपिनियन from people who are using that particular mobile, but you will cross check with the mobile gallery or its website, or you will go through the expert's opinion about it. In the very same way, career guidance is a critical decision, so professional counseling is strongly recommended. तबीयत में थोड़ा बहुत होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई लेके आते हैं. करियर में थोड़ा बहुत आता है तो हम अपने आप ट्रीट करना चालू करते हैं. गड़बड़ है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं हमारे दिमाग में है. इट इज़ नॉट, अवेयरनेस इज नॉट देयर. चिल पीपल आर सेइंग कि हमारा बच्चे का करियर चॉइस हो गया, कभी करियर काउंसलर की जरूरत नहीं है. करियर काउंसलर की जरूरत करियर चॉइस के लिए है ही नहीं. करियर चॉइस तो आपका पर्सनल चॉइस है. उसको राइट चॉइस बनाने के लिए करियर काउंसलर की जरूरत है. ही विल कीप ऑन गाइडिंग यू, ही विल कीप ऑन सपोर्टिंग यू, keep on cautioning you. Yeah, career guidance is a critical decision, so professional counseling is strongly recommended. Making the right choice is क्या process क्या है, whether you come to me for career guidance or not, you need to do this even if you have made the choice. What is your plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, plan H, plan Z तक आप कर सकते हो, करना ही चाहिए. क्योंकि if you don't get into your plan A and you miss the bus for plan B, plan C and plan D, which you would have very easily gotten if you had applied on time, you will end up choosing plan E even if you were eligible for plan B. That is why, making sense, bachcha log? Please respond, unmute and respond. Yes, sir. sir. So survey all the career options. Don't be myopic. Even if you are sure about what you want to do, make a list of interesting careers. Make a list of interesting careers. आपका नंबर 1 करियर तो पाव भाजी है, मतलब आपका नंबर 1 चॉइस पाव भाजी है. कि देखो नहीं, सिजलर्स भी ठीक है, ओके, पिज्जा भी ठीक है, पनीर बटर मसाला seems to be very tasty,
ये मतलब 7 8 10 चीज आपने लिस्ट की, फिर बोले नहीं ये सब बाद में देखेंगे, बाद में खाएंगे, अगर पाव भाजी खानी है। नहीं तो अरे यार पाव भाजी आ तो गई है, बट सिजलर खा लेते हैं यार, पाव भाजी पार्सल कर लेंगे, या तो वॉचमैन को दे देंगे या तो फिर उसको फ्रिज में रख देंगे, कल सवेरे गर्म करके खा लेंगे, या तो रात को गर्म करके खा लेंगे, या तो पड़ोस में हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं उनको पार्सल करके उनको बोल देंगे, वट एवर. देर इज वेरी लिटिल कॉस्ट, बट वेन यू आर चेंजिंग योर करियर मिड वे, very huge cost, or you are getting into a career because your plan B, plan C, plan D, you missed the bus. Very painful, very painful. I see lot of people in plan B nahi hai, plan A hai, MBBS. Lot of people in homeopathy college, out of 100 students, more than 80 students would be dukhi atma. They are in there because it is not their choice, because they had no choice. So make a list of, or there are some people who are really by choice, उनका plan B था होम्योपैथी का, they are going in with proper frame of mind and they become the best doctors because their intention is healing, the process is homeopathy, not allopathy. So make a list of interesting careers, do in-depth research about challenges you need to face while pursuing this career. Yes, खाली उड़ी नहीं मार देनी है कि मुझे स्विमिंग आता है तो मैं श्रीलंका तक तैर के चले जाऊंगा. Not possible. You need to be a cross country swimmer. You need to prepare. You need to be fit. हाँ मुझे बस हाइकिंग बहुत अच्छा लगता है. I will go and go on to climb the Mount Everest. Not possible. You have to prepare, right? So do in-depth research about challenges you need to face while pursuing these courses. Be prepared. And how would you be prepared? Interview successful professionals and find out market sustainability of courses in future. आप पूछो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स को कि इसमें कितना पापड़ बेलना पड़ा, और हाउ मेनी ऑफ योर कलीग्स यू फील यू नो दैट दे आर नॉट सक्सेसफुल इन. आप आशीष चंचलानी जी को पूछो कि हाउ कितना पापड़ उन्होंने बेला टू बिकम अ यूट्यूबर कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, राइट? और उसके साथ में जो लोग कर रहे थे शुरू में कंटेम्पररीज, और पहले जिनको देख के उनको इंस्पिरेशन हुआ, वो क्यों गिर गए और वो मिस्टर आशीष चंचलानी क्यों आगे बढ़ गए. आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग हिम और नॉट आई एम मार्केटिंग हिम, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सर्टेन म्यूजिशियंस, उसको देख के आपको लगता है बस मुझे म्यूजिशियन बनना है, वेरी गुड, बट उसने कितने पापड़ बेले वो देखो. पापड़ बेलने की जरूरत है आपको, वो नहीं बेलना है और सीधा आपको फास्ट फूड चाहिए. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. You are seeing the success, you are not seeing the hard work and perseverance and challenges and failures and upsets and nervousness and depressions and criticisms and feedbacks and what not. How much it took for them to face all this resistance and come out. An engineer getting into stand-up comedian, कितने लोगों ने उसको discourage किया रहेगा, right? So interview successful professionals and find out market sustainability of courses in future. Shortlist few careers. They will be able to tell you कि फ्यूचर में भी क्या है. फिर ये सब करने के बाद में आप शॉर्टलिस्ट करो 8-10 करियर को. कितनी करियर पाथ है मालूम है? 150 प्लस करियर पाथ्स आर देयर इन माय करियर लाइब्रेरी, जो मैंने आपको दिया और अभी ग्रुप में भी दूंगा. यू शॉर्टलिस्ट अ फ्यू करियर्स एंड गिव देम रैंक्स. आप अपने आप दे दो, फिर मम्मी पापा के साथ में बैठ के रैंक दे दो. तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एवरीबडी इज नोइंग. So your team is ready, you and your parents. The best team forever. They may not be effective, but they are very effective in loving you and caring for you. They may not know all the answers. They will know how to find the answers. Even if they don't know, they will hire somebody to find the answers. They will find the things for you. इतना रैंक देने के बाद में जीरो इन ऑन योर चॉइस. बाद में भी आपकी चॉइस पाव भाजी ही रहेगी, तो रखो ना. बट देन किसी का सिजलर देख के दिल में कुछ कुछ नहीं होगा. यू नो दैट यू हैव सीन इट एंड डन विथ इट. आपको नहीं जाना था उधर, राइट? आपने बोला मुझे ये पाव भाजी खाना है, वो बोलेगा कि खत्म हो गया, तो ओके सेकंड बेस्ट आपके पास रेडी है, नहीं तो वापस मेनू देखने बैठोगे और क्या खा सकते हैं. उसमें और 15 मिनट जाएगा, फिर आर्ग्यूमेंट होएगा, अरे पाव भाजी नहीं, अरे मुझे
मुझे इडली सांभर खाना है, तो एक ही टेबल पे आप देखो, जब भी वो प्लान करके नहीं जाते ना, एक ही टेबल पे इडली सांभर भी आता है, पिज्जा भी आता है और पनीर बटर मसाला भी आता है. नथिंग रॉन्ग, बट देर इज, यू कांट एंजॉय. अगर सब लोग एक ही खाना खाते हैं तो साथ में बैठ के मजा आता है, राइट? सो मेकिंग द चॉइस राइट, वो कैसे करना पड़ेगा? यू हैव टू एग्जामिन योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज एटसेट्रा रियलिस्टिकली. आपको आपके खुद के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस रियलिस्टिकली जज करना पड़ेगा. फिर आपका पर्सनल इनपुट्स रिक्वायर्ड, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जज किया कि आप यहां पर है, वो आपको जजमेंट करना पड़ेगा. और आपको कहां पहुंचना है, गैप क्या है, तो गैप एनालिसिस वो प्रोफेशनल अच्छी तरह से कर पाएगा ना, कि आपका ये कॉम्पिटेंसी है और आपको यहां तक होना जरूरी है, इतना आपको डेवलप करना पड़ेगा. विटामिन डी कम है, लेकिन कितना कम है, वो हिसाब से डोजेज नक्की होगा ना. एज सिंपल एज दैट. फिजिक्स टफ जाता है, लेकिन कितना टफ जाता है? यू जनरली से दैट फिजिक्स बहुत टफ जाता है. कौन सा पार्ट टफ जाता है, कौन सा चैप्टर टफ जाता है, चैप्टर का कौन सा पार्ट टफ गया? देखोगे तो only 10% of physics is tough probably for you, but that fear, that particular burden is so much that बाकी का 90% भी आप हाथ नहीं लगाते हो तो वो टफ बनते जाता है. Check your flexibility, आपका willingness and flexibility in creating possibilities to emerge as an outstanding person or professional in the area of the correct career selected. That is how you make the choice right. You will be living your choice for the rest of your life by making the most valuable investment of your time and effort. And money can be come back. Money can come back. Time वापस नहीं आता है. Time is more than money. And smart hard work, efforts, your emotions, energy, health, आपने उसमें झोंक दिया और फिर अगर तो कितना मूड ऑफ होता है. तो ये स्मार्ट हार्ड वर्क, योर इमोशंस, इतना वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट हो जाता है अगर आप उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैप्पीनेस नहीं दे रहा है. सो अ थरो रिसर्च ऑफ सेल्फ एंड करियर ऑप्शंस विल सेव द फ्यूचर रिग्रेट्स. देयर वाज अ पर्सन, माय फ्रेंड, ओके, ही इज अ डॉक्टर. He has not practiced a single day. He's a qualified MBBS. He didn't do even internship. He did medical because his father told him to. Brilliant student. He always wanted to be a businessman. He is a very, very highly successful businessman. He is one doctor who is a businessman by choice, but by qualification he is a doctor. Yeah. He is always saying कि अगर मुझे पहले मेरा choice, मैं मेरे मम्मी पापा को कन्विंस कर पाता तो मेरा जो 6 साल मेडिकल पढ़ने के लिए गया, 6.5 साल, 2 + 4.5, ऑलमोस्ट 5, 2 + 5, 7 years, वो मेरा, मैं MBA खत्म कर लेता था उतने टाइम में. You know, that is what, but of course then he did his MBA also afterwards. Distant MBA. Okay, distance MBA किया उसने. A thorough research of self and career options will save the future regrets. Please feel free to use our career library, a free resource on our portal to help you make the choice right and right choice. This is the career portal. Yes, you will have to do the studies also ना, वो interest generate करना पड़ेगा, because then if you know कि आपको यूट्यूबर बनना है, but you also know आपको फुटबॉलर बनना है, आपका पैशन है फुटबॉल, राइट, और फुटबॉल को छोड़ नहीं सकते हो, बट आपको पता है कि यूट्यूबर और फुटबॉल और उसमें अगर सर्टन करियर नहीं बना तो बैकअप प्लान के लिए एजुकेशन लेना जरूरी है. सो दैट जस्ट इन केस दैट थिंग डिडंट मटेरियलाइज, यू हैव अ बैकअप डायरेक्टली, अ गुड जॉब, गुड इनफ जॉब. तो वो टाइम पे क्या होता है, फॉर द लव ऑफ योर स्पोर्ट्स यू विल पुट इन एफर्ट्स फॉर योर स्टडीज एज अ बैकअप प्लान. बहुत गहरी बात है. जब भी करियर काउंसलिंग के लिए आओगे तो मैं उसके अंदर आपकी जो ट्रेड्स है उसमें आप 2 काम कर पाओगे कि नहीं, आपको बैकअप प्लान कौन सा इजी पड़ेगा, कंसिस्टेंट पड़ेगा, वो सब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करके देना पड़ेगा. दैट इज द करियर गाइडेंस. इट इज नॉट जस्ट करियर चॉइस. ओके, फ्री रिसोर्स है, आप हमारे पोर्टल को एड्रेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो,
गूगल मैप का एग्जांपल दूंगा. हाउ द गूगल मैप, ओनली 5 मेजर aspects. There are so many functions included in Google Map. Only 5 मैं आपको अभी बोलूँगा. 5 Google functions, Google Map functions which are integrated to make map very effective. And there is an analogy to life goals. Life goals are in black and Google Map functions are in red. Destination, GPS. Destination means your goals, short term, long term. And for each and every goal, you need to check your current status, strengths and weaknesses. Be appropriate. आपकी गाड़ी नैनो है और आप खड्डा जो है और उसके ऊपर झूम 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 जाओगे तो ना गाड़ी रहेगी ना आप रहेंगे. Right? So you need to be appropriate of your current status, strengths and weaknesses, your vehicle, your brain and your support structure, that is your family, and how prepared you are for the journey, how much risk you are willing to take, how much efforts you are going to put in, how much money you can afford, and if you cannot afford, how would you manage the scholarships, right? जैसे 3 Idiots वाला रणछोड़दास चांचड़ फुंगसुक वांगड़ू के जैसा, right? So you need to create that kind of studies के अंदर इतना एक्सपर्टीज करो कि आप तो कोई भी रोकने के लिए, फाइनेंस तो एकदम छोटी बात है, मिल जाता है. लेकिन अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं है, वो बोलते मेरे को स्कॉलरशिप दो, तो कौन देगा? कोई नहीं देगा. वो तो भिखारी. मंदिर के बाहर बैठ जाओ तो हो जाएगा. मंदिर के बाहर बैठ जाओ, गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाओ, सिग्नल पे घूमो, मिल जाएगा पैसा. Various paths to reach your goal and choosing the most suitable path. Don't trust your instincts. Don't trust your instincts. When I am telling you, it is that the friend did MBBS. He was a gold medalist almost. मतलब almost the topper in the class. Top 10 में था वो पढ़ाई को justice दिया. Now he could have, but वो conversation hypothetical है, वो नहीं गया है. See, one of the problem is too much thinking, too much analysis causes paralysis. ये सब जो tough decisions है उसमें इंस्टिंक्ट नहीं, रियलिटी को ज्यादा फोकस करो. इंस्टिंक्ट में यू मे गो रॉन्ग. चलो इंस्टिंक्ट को पकड़ो, मैं तो बोलता हूँ इंस्टिंक्ट पकड़ो, इंस्टिंक्ट पकड़ो, बट देन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. इंस्टिंक्ट के बाद में भी कॉन्सिक्वेंसेस सोचे समझे बगैर आप खुद पढ़ते हो, फिर बोलते हैं कि अरे यार इतना खराब होगा, पता नहीं था. अरे इतना खराब होने वाला था, क्या पता नहीं था? आपने कॉन्सिक्वेंस नहीं देखा और उड़ी मार दी तो आपकी गलती है ना. रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं उसको. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बाद में रिस्क मैनेजमेंट आता है. ये प्रिपरेशन, दिस इज ऑल रिस्क मैनेजमेंट. वेरियस पाथ्स टू रीच योर गोल एंड चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पाथ. आप जाना है आपको गेटवे ऑफ इंडिया फ्रॉम विरार, बहुत सारे रास्ते हैं. और बाय रोड जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, एंड आपको आधे घंटे में पहुंचना है. अनरियलिस्टिक है. एंड यू डोंट इवन हैव अ चॉपर. आपके पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है. अरे विरार में हेलीपैड है तो बनाना पड़ेगा पहले आपको. Then you will be able to reach in half an hour, less than half an hour, right? So you need to be appropriate to lot of things. ये बहुत sensitive choice है. That is why I charge a lot. I charge a bomb for my career guidance. I'm a premium coach, okay? If you come to me, I'm going to charge, but then I'm going to give the value for money. Much more than what you paid for. Guidance with preventive measures and course correction if and when required. All these things is career guidance. All these things are important. Goal setting, with respect to that, looking at current status and strengths and weaknesses. आप कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना है, आपके पास vehicle कौन सा है, आपके पास fuel है कि नहीं, आपको आता है कि नहीं गाड़ी चलाना, इतने ट्रैफिक में चला पाओगे कि नहीं, रात हुई है रात में चला पाओगे कि नहीं.
अलग अलग पाथ से, यहाँ पे ट्रैफिक है, दूसरे पाथ से जाओ, वहां पे अटक गया तो यू टर्न, लेफ्ट टर्न मार के यहाँ से निकल जाओ, फलाना ढिमका ये करके करो, राइट। गाइडेंस विथ नीट में ये बार नहीं मिला, लेकिन मैं कमिटेड हूँ, मैं एक बार और मेहनत करूंगा, करो, नो प्रॉब्लम, बी प्रिपेयर्ड। मुझे आईआईटी, एक लड़का है मेरा स्टूडेंट, आईआईटी मद्रास में मिला, बोलते हैं नहीं मुझे आईआईटी मुंबई में ही चाहिए। ही डिड नॉट टेक एडमिशन इन आईआईटी मद्रास, ही डिड नॉट टेक एडमिशन एनीवेयर, ही गेव आईआईटी एंट्रेंस अगेन नेक्स्ट ईयर एंड ही गॉट इनटू आईआईटी मुंबई। तो ऐसे भी हिस्ट्रीज है, राइट। 30% of the admissions in medical college are of second attempt people, committed, क्योंकि उनका ना बोर्ड का प्रिपरेशन करना है ना कुछ करना है, जोरदार धक्का मार के पहले साल में कर दिया, फिर भी 2 3 4 मार्क के लिए अटक गए, बोला कि नहीं मुझे कैपिटेशन फी भर के नहीं करना है, मुझे पेड सीट नहीं लेनी है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, मैं मेहनत करूंगा। ऐसे लोग हैं, नहीं है पैसा प्राइवेट कॉलेज में जाने का, उसके लिए थोड़ी स्कॉलरशिप मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एमडी के लिए भी स्कॉलरशिप मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज का एमडी का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, वो फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक भी सोचता है कि दें कि ना दें, राइट। आप डॉक्टर बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आपको इक्विपमेंट के लिए देंगे, भाई इसको आता है, वो पैसा वापस दे पाएगा, ये तो पढ़ने के लिए पैसा बैंक वाला देने को बहुत सोचता है। गाइडेंस विद प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कोर्स करेक्शन इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जर्नी, चाइल्डहुड, लर्निंग कर्व, मोमेंटम कैसे आया, आपने बचपन से पढ़ाई चालू की, बचपन से लर्निंग चालू किया, आपका कैपेबिलिटी, स्किल्स, सो यू हैंडल चैलेंजेस, तो रेजिलियंस डेवलप हुआ, आप कहाँ पे अटक गए, कहाँ पे आप आगे बढ़े, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दिखी, आप स्टॉप किए, रिस्टार्ट किए और एक्सेल किया, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपके डेवलप हो गए, कॉन्फिडेंस और फियर डेवलप हो गए, राइट। करंट स्टेटस आपका पता चलेगा अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट करोगे, तो अपने आप जज करना आपकी सेहत के लिए, आपकी करियर के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चा लोग, सच्ची बोलता हूँ, ये सब फैशन में मत जाना प्लीज प्लीज प्लीज। ये स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको और ड्रिंकिंग, बी वेरी केयरफुल, वेरी इजी टू गेट इन, वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट, ओके। और दिमाग का कैंसर होता है ये सब यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के, गलत तरीके के मीम्स। मीम्स आर somebody else's thought process. I always tell that वो entertainment के लिए बराबर है, but if you overdo that, it will hamper your thought process. आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थॉट्स की, वो आउट हो जाती है। वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर एजुकेशन देखेंगे करंट स्टेटस के ऊपर से, फिर चॉइस आती है, फिर लाइफ आती है। वो लर्निंग कर्व का डेफिनेशन क्या है, लर्निंग कर्व में क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, कल्चर, फैमिली, एनवायरनमेंट, स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मीडिया एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ से आपका डेवलपमेंट हुआ है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल नाउ। तो वो लर्निंग कर्व की एनालिसिस भी हम अलग से करते हैं, अगर आप वो पैकेज लेते हो तो। हमारे पैकेज बहुत अलग अलग है, मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ इट, बट लर्निंग कर्व की वजह से मैं आपको पिन पॉइंटेड सजेशंस दे सकता हूँ। आपका जर्नी इन शॉर्ट इज लाइक दिस, स्टार्टिंग पॉइंट, लर्निंग कर्व, राइट नाउ आप कहाँ हो, फिर आपके पास ऑप्शंस आ गए, फिर उसमें से आप राइट चॉइस करोगे, फिर आप तैयारी रखोगे कि मेकिंग द चॉइस राइट के लिए, और देन यू विल लीव द चॉइस विथ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड satisfaction. Whether you like it or not, you will have to do parallel education. I am going at a good space, बहुत fast नहीं जा रहा हूँ, you are okay children? Yeah, it's fine. We are fine, right? Okay, peace. Parallel education has language skills. Whether you are a doctor or an engineer or a business person or a YouTuber, your communication skills need to be always upgraded. So you need to develop your language skills, personality development, public speaking,
effective communication, business communication, social media communication. Everywhere the language is there, right? Your presence on LinkedIn, what you are writing on Facebook, what you are writing on Instagram. Language skills need to be upgraded on regular basis. That is why it is called parallel education. So habit of reading. Today's readers are tomorrow's leaders. Reading what? Reading books, reading authentic sources, reading the articles from authentic sources, not from anybody and everybody who is blogging on. It is a point of view, no the point of view. So don't get influenced by somebody else's point of view. But you need to keep reading to improve your language skills. Attend appropriate coaching classes, probably attend acting classes also if you want to be a public speaking person. Or I have not attended any, but I recommend people to attend public speaking courses and all that. I never attended any such courses for public speaking or acting or anything. Logical capabilities. You need to ongoingly challenge your brain to the next level of logic. So you need to keep on working on your logical capabilities. There are various ways and means, going through certain courses, certain workshops, certain puzzles, certain books of logic development, certain theories of logic development. MS Office and Google. You need to learn MS Office and Google. You need to learn, you need to learn, you need to learn, you need to learn. Because computer, whichever career you are in, this is going to be an important part. All the programs are either based on MS Office and Google or similar to them. So if you know that, you can adapt to any organizational softwares. Online image management and offline image management, very important. I have been telling you. I will tell you some more. Please do not visit the sites which you don't want your parents to know. Don't write the words, don't use the words which you don't want your parents to know. I'm not talking about parents, I'm talking about कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. और इमेज अगर बिगड़ गई तो सुधारना बहुत मुश्किल होता है. अगर आप किसी को बोलोगे अरे परेश सर का सेशन था, पक गए, बहुत पकाया चश्मे से, सब लोग मान गए, मान जाएंगे. खाली 11 जन आए ना, बाकी के लोगों को बोलेंगे, पहले सेशन में 30 जन आए थे, बाकी के लोगों को बोलेंगे नहीं रे इतना खास नहीं था, तो बोलेंगे हाँ यार आजकल ऐसा ही है, इमीडिएटली मान जाएंगे. लेकिन आप बोलेंगे अरे सेशन मस्त था, अच्छा पक्का, आर यू श्योर, 1000 बार कंफर्मेशन मांगेंगे. बिकॉज झूठ है ना ताबड़तोड़ बिक जाता है. सच बेचने के लिए सवेरे से शाम तक बेचो, छोटा वाला भी नहीं बिकता है. लोगों को प्रूफ चाहिए. मैं गलत इंसान हूं उसके लिए प्रूफ नहीं मांगेंगे, वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है. जैसे ना दूध जो है ना, दूध घर पे पहुंचाना पड़ता है, दारू की दुकान पे लाइन लगती है, राइट? वैसे ही है, राइट? एक बार इमेज बिगड़ गई, 50-100 जन को पता चल गया, लाख को कैसे पता चलेगा पता नहीं, फटाफट पता चलेगा. लेकिन फिर न्यूज़पेपर में बड़ा न्यूज़ आ गया कि ये बड़ा स्कैमस्टर है, आ गया. फिर बाद में पता चला वो स्कैमस्टर नहीं है, लेकिन लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने बात करना चालू कर दिया. एक जन ने 100 जन से बात की, 100 जन ने दूसरे 100 से बात की, धड़ 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 मल्टीप्लीकेशन हो गया. और फिर आफ्टर 7 days वो पता चल गया इट वाज अ रॉन्ग एक्यूजेशन. कोने में आ गया क्योंकि तब तक कोई दूसरा स्कैम आ गया, हेडलाइन कोई दूसरी है. चलो वो भी बड़ा हेडलाइन आया, तो भी आप कितने जन को बोलोगे? जो आपने 100 जन को बोल दिया परेश बदमाश है, आपको याद भी नहीं रहेगा कितने कितने को बोल दिया आपने परेश बदमाश है, और उन्होंने कितने कितने को बोल दिया. एंड हाउ मेनी पीपल वुड बी कमिटेड टू रिजोल्व इट फॉर योर सेफ. वो आपको जानते भी नहीं, आपके बारे में उन्होंने बुराई कर दी, खत्म. So online image management is very important. What are you posting? Who are your friends on Facebook, on Instagram? Are they good for nothing? People will judge you from the friends you have. So online image management करना है, offline image management करना है.
जो रास्ते पे जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना है? ऐसे दोस्तों के साथ में खड़ा रह के आपकी थॉट प्रोसेस तो स्लो हो ही जाती है, इफ दे आर नॉट प्रोग्रेसिव. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज एनी फ्रेंड हु इज बैड फ्रेंड. नो बैड फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स आर ग्रेट फ्रेंड्स. आप उनकी हैबिट्स पिकअप करते हो. So if you are smart enough to pick up only the good habits, good, be friend with anybody. दूसरा है, वो अलग हो गया, लेकिन आपको अगर वो इंसान के साथ में किसी ने देख लिया तो पीपल विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस. सो सोच लो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इमेज मैनेजमेंट आपको करना है, बिकॉज पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, वेदर यू लाइक इट और नॉट. दे आर जजिंग यू वेदर दे लाइक इट और नॉट. इट इज ऑटोमेटिक बिहेवियर. आपने मुझे जज कर लिया, बराबर ना? एवरीबडी हैज जज्ड मी. Some of you are with me for 3 hours now. You have already judged me. You didn't have to put in efforts. Judging, we are automatic judgment machines. So people are judging us. People are judging us. People are पहले तो ऑब्जर्व कर रहे हैं. ऑब्जर्विंग अस, जजिंग अस, लेबलिंग अस एंड स्टीरियोटाइपिंग अस. ये तो ऐसा ही होता है, इस्त्री करके रख दिया. You have no choice. I have no choice to match it. If I am not matching it, you look at me at doubt. अच्छा, ये ऐसा तो था नहीं. अरे मुझे जज कर लिया 3 दिन में, 3 घंटे में. मैं बोल रहा हूँ आपको, 53 ईयर्स का मेरा जो है वो शायद वो पॉइंट पे मैं थोड़ा सा थका हुआ था, या तो वो टॉपिक थोड़ा मेरे बजट का नहीं था, मेरे सोच का नहीं था, तो मैंने ठीक से नहीं किया. उसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूँ. एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू to make your image up or break your image. So be very careful, be very alert. Please participate in conferences, shows and events to keep updated with it. Join associations and clubs in the college so that you can really have your recreation at will and in the place where you study, so you don't need to go outside. There are film societies and there are functions and there are happenings and socials and get-togethers happening all around the college. If you are keeping your eyes and ears open, you can have fun in the college itself with the like-minded people, with the same profession people, which you are going to spend a lot of time with them, including your professional life. These two things are parallelly to be practiced. This is parallel education, to be self-disciplined and to be self-motivated. Parents of success. These are the parents you can adopt. Parents of your success are your self-discipline and your self-motivation. And you can either adopt these two parents or you can adopt laziness and procrastination. You decide which parents you want to adopt. Your journey, now let us see how a career mentor or how we can help you, okay? How our assessments can help you. When you go to any counselor, they will do some assessment which will ideally turn out to be the assessment that I am doing. But मेरा जो है वो one step ahead है, मैं बताता हूँ आपको. अब सिम्फनी के साथ में अगर आप करते हो तो साइकोमेट्रिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होती है. खाली टेस्ट करेंगे, असेसमेंट करेंगे तो 3000 रुपीज. साइकोमेट्रिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन वुड बी 10,000 रुपीज. 2 स्टेप में करना है. आप पहले खाली टेस्ट कराना चाहते हो और फिर असेसमेंट के लिए आओगे, काउंसलिंग के लिए आओगे कि भाई नहीं मेरे को समझा नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी ईजिली आपको गाइडेंस दे सकता है. सो इफ़ यू हैव समबडी इन योर फैमिली हु आर capable of connecting this report to your development, then you don't need to take the counseling. But if you come to me, it is 3,000 plus 8,000. Total cost would be 11,000 or 10,000 if you go for 2-step process at the same time. So what I'm going to do is I'm going to stop sharing right now and I'm going to demonstrate the portal, how the report is. Okay. This is my portal. When I said career.symphonyforall.com, this is the portal. If you see, there is comprehensive career mentoring by experts. I'm going to guide you through the entire portal so that you can use the resources freely from today.
explore and find out your most suitable career path out of 20 career clusters. So we have divided all the potential new and old career, new upcoming careers which are recent, and there are age old career options. Total मिला के 20 career clusters में उसको divide किया है, and there are 150 plus career paths like education path, and then 2500 plus occupations. Let's see the career library first. And we have the assessment from right from second standard to senior professionals. Right? We have the assessment from second standard to professionals, every age group. Let's see career library. There are this career, or I would say what? Career clusters. Let's say business management, or let's say health science, dentist, homeopathy, alternative medicine, therapy science, medical diagnostic services, medical transcription, nurse and medical assistant, pharmacist, dietitian, optometry, audiologist, general physician, operation and theater, hospital management, public health care. So it is for all the doctors and surgeons. This is it. I'm just planning to change this to doctor and surgeons. Let us see general physician. So this is the way a small paragraph about what being a doctor is, then what is the work nature, and the key skills required, some indication about the career, occupations, some indicative occupations. Doctors का तो list बनाओ तो 1000 टाइप के डॉक्टर बनते हैं. Super speciality and speciality and career analysis. And there are career videos and career navigator. How would you do that, right? And which are the entrances, which are the colleges and which are the entrances. Right, now comes so this is one career. So what my recommendation is, please go through each and every careers, this part at least. Okay, the people who have given up maths, you don't need to go through this, but you can go through it to know that what is the importance of this career in the human society. So at least you will be able to respect that profession, like an air hostess or a pilot or a fashion designer. You may not do that ever, right? Say you want to go about government services, Civil Administrative Staff Selection Commission and Indian Economic Services, IES. So see how would you go about it, about career. Pointed, मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट आया तो फिर आप गूगल पे उसको और थोड़ा डिटेल में जाओ. Right? You watch one video and once you watch it on YouTube, you will get other videos also, right? Very easy. YouTube वाले तो बराबर आपको पता चल गया, उनको तो बताते रहेंगे. So this is the way you can go through all the career clusters and career paths. There is no charge for it. It is a completely complimentary resource. Now, as I said, there is a assessment report. I'm going to show you that report, but there is one more thing, that is check suitability. You can check your suitability. You say that, okay, I don't want to do anything. मुझे doctor ही बनना है. Whether I am suitable for that as of now, whether I am up to the mark as of now, you can check suitability, and the cost of that is only ₹300. But then you will get only suitability of one particular career and gap analysis. If it is not suitable, then why it is not suitable, you will be able to see that. And if it is suitable, that gap analysis also be there कि भाई कितना कम आपको मेहनत करना पड़ेगा. I'll show you an existing report, comprehensive report. मैं आपको 9th-10th का PCM का भी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, बट मैं जनरल रिपोर्ट बताऊंगा तो सब करियर ऑप्शंस आपके नज़र में आ जाएंगे. ओके, सो देयर आर, अगर आप PCM लिए हो तो बायोलॉजी रिलेटेड करियर्स विल बी आउट, और अगर आपने PCB लिए है तो मैथ्स रिलेटेड करियर्स विल बी आउट. सो आउट एंड आउट करियर कितने, वो सारे. अगर आपने PCM भी लिए है
PCM लिया हुआ है तो कॉमर्स के करियर का भी फिजिबिलिटी आएगा, बिकॉज यू आर एलिजिबल टू गेट इनटू कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम आफ्टर 11th एंड 12th, राइट. सो द फर्स्ट लेवल आपने असेसमेंट दे दिया, आपने पेमेंट कर दिया, आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया. तो इस तरह से सबसे पहला जो लेवल है उसमें सारे 20 करियर क्लस्टर्स और रिलेवेंट करियर क्लस्टर्स 15-17 डिपेंडिंग ऑन योर करियर चॉइस. मतलब आपके PCM है, PCB है, अगर PCM भी है तो ये सारे आएंगे. So the student can select 4 career clusters at a time. One by one, he can go through all the career clusters, feasibility, degree of feasibility clearly. हम top के 4 देखते हैं, then you can see next 4 and so on and so forth. Now the second is the summary report of each and every career path under each career cluster. जो 4 career cluster हमने select किए, उसका under के career path को 2 पार्ट में लिया है, साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड स्किल एंड एबिलिटीज, राइट. तो साइको मतलब 2 पार्ट में आपका असेसमेंट होगा, साइकोमेट्रिक होगा और स्किल एंड एबिलिटीज होगा. दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको या तो बोर्ड चॉइस देगा, या तो टॉप चॉइस देगा, या तो ऑप्शनल देंगे, या तो अवॉइड देंगे, या तो एक्सप्लोर देंगे, या तो डेवलप देंगे. सो टॉप चॉइस एंड गुड चॉइस, नेचुरल सक्सेस. तो ये लड़की को 26 टॉप चॉइस एंड गुड चॉइस है, तो उसका शॉर्ट लिस्ट तो ऑटोमेटिक हो गया. हाउ इज इट डन? Each and every question is connected to the algorithm, and through the algorithm it is connected to each and every career. तो वो algorithm के through उसका ये पूरा judgment आता है. Every question has a algorithm attached to it. Then this is the second level of the report. अभी comprehensive report. We did all the counseling. This girl had scored 96% in 10th boards, CBSE board, 99 in maths and 96 in science, and she had got 95%. I'm sorry, but then we decided counseling psychology as her career option. Then comes the total assessment report with respect to counseling psychology. Last 5 pages would be dedicated to counseling psychology. Rest of it is the general representation. So in that way, the you can access all the career paths, feasible or non-feasible, individual PDF reports, 100 plus PDF reports, 130, 140, depending on the actual feasible careers, आपके लिए जो possible career path है. तो पहला पार्ट क्या आता है, आपका स्टेज कौन सा है. फर्स्ट डायमेंशन ऑफ योर साइकोमेट्रिक इज व्हाट स्टेज ऑफ थिंकिंग और प्लानिंग यू आर एट. Second is your career personality. It has got 8 different dimensions. You are measured on all the 8. Then you need, we are thinking that one of the way to look at your career option is by profiling your strengths. So third is your profiling of your strengths. Which are your strengths? Fourth is your career interest. Fifth, and it is a decoded report. There is no hidden thing over here. The things are discussed over here. Motivators, career motivators के 7 dimensions होते हैं. Which particular career will motivate you more, because these are the areas. So whichever is matching the most, वो आपके psychometric में green signal आने के chances बढ़ जाते हैं. 6 aspects for psychometric. 6th one is आपका learning style, because any career you need to keep learning, upgrading yourself. So if your learning style is appropriate to that career or not. Yeah, cinematographer, definitely visual learning है, तो she will learn cinematography very quickly, right? Because that is her primary source of learning. But read and write learning उसको करना पड़ेगा, because you have to develop everything. It's not that खाली विटामिन बी जरूरी है तो विटामिन ई को इग्नोर करो, नहीं, उसको भी इग्नोर नहीं करना है. So you need to develop it. तो उसका corrective things the counselor will be able to give you. So these are the 6 dimensions of psychometric and 8 dimensions of skills and abilities. 8 dimensions of skills and abilities are there. And then the first layer of the report is repeated because it is downloadable. So you can download, generate and download the reports of 100 plus career paths that are available to you. Available, whether you are, it is feasible or non-feasible, वो तो आपको choose करना है. So जो 4 career cluster select किए, उसका एक रफ
pointers hai, some description. Then the second layer is repeated. And then the last 5 pages, as I said, career report for counseling psychology. If it is a good choice, that means this is it. If it was good choice and top choice, then you are able to do it. We recommend that good choice और top choice में से आप अपना career choose करो तो better है. नहीं तो डेवलप और ऑप्शनल में जाके देखो कि कितना मेहनत करना पड़ेगा. देन यू शुड नो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको समझ में आएंगे. अपने आप समझ में आए तो अच्छी बात है, काउंसलर को तो पक्का समझ में आता है, तो आपको तैयार करके भेजते हैं. अवॉइड एंड एक्सप्लोर. इट्स लाइक यू आर रीडिंग अ पैथोलॉजी रिपोर्ट एंड गोइंग एंड टेकिंग द मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी, नॉट गोइंग टू द डॉक्टर एंड शोइंग द रिपोर्ट. आई वुड तो स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको काउंसलिंग करना चाहिए, इवन इफ यू आर क्लियर कि डॉक्टर बनना है. यू नो काउंसलिंग का मतलब क्या है, जो करियर गाइडेंस की बात कर रहा हूँ. तो अवॉइड और एक्सप्लोर वाले को तो पूरा अवॉइड ही करना है, क्योंकि उसमें सुपर हार्ड वर्क डालना पड़ेगा. देन काउंसलिंग साइकोलॉजी का वर्क नेचर है. देन एजुकेशन रोड मैप, जनरल गाइडेंस अबाउट इफ यू वांट टू डू साइकोलॉजी देन दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस आर द ऑक्यूपेशंस. जनरल गाइडलाइन है. सो आपको एक पता चले देयर कैन बी मेनी मोर ऑप्शनल टॉपिक्स, ऑप्शनल वेज टू परस्यू साइकोलॉजी, but that can be researched later on. but एक गाइडलाइन के बगैर तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा वो तो पता ही नहीं चलेगा ना, right? then comes the next level, career path analysis. फीस कितनी है, डिमांड कितनी है, इनकम कितना है और मेहनत कितनी करनी पड़ेगी. then this is it, summary. so you saw one report, यू से कॉर्पोरेट ट्रेनर का देखना है तो जनरेट करो. यू कैन जनरेट ईच एंड एवरी करियर ऑप्शन फ्रॉम ईच एंड एवरी करियर क्लस्टर. सीट लास्ट तक तो सेम रहेगा, लास्ट के 5 पेज ही अलग होंगे. अगर आपने करियर क्लस्टर अलग सिलेक्ट किया तो अलग आएंगे बीच के पेजेस. कॉर्पोरेट ट्रेनर का करियर पाथ है, उसका वर्क नेचर आ गया, उसका एजुकेशन रोड मैप आ गया, career path analysis आ गई. That's it. You went back, you want to select 4 different ones, please do that. सब सिलेक्ट करके सब रिपोर्ट देख सकते हो कि उसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी. ये देखो यहाँ पे गैप है. कैपेबिलिटीज है 95% है, तो पढ़ाई तो अच्छी कर ली है लेकिन उसका साइकोमेट्रिक ही मैच नहीं कर रहा है बायो साइंस एंड रिसर्च में. सी लुक एट दिस. वो अवॉइड करने को आ गया. बच्ची सिंसियर होने की वजह से पढ़ तो लेगी, मेरा फ्रेंड जो है वो ऐसा ही रहेगा. स्किल एंड एबिलिटीज है, यू आर ब्रिलियंट, यू विल डू एनीथिंग, यू कैन स्टडी एनीथिंग इफेक्टिवली, बट इंटरेस्ट नहीं रहेगा. दैट फेलो विल गेट, दिस गर्ल विल गेट क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर ऑल्सो, आर्किटेक्ट ऑल्सो, बट शी विल नॉट बी वेरी हैप्पी आर्किटेक्ट. but she will be a very happy creative writer, very happy psychologist. That's what, right? So in that way you can see all the assessments systematically. So your choice becomes a little bit more comfortable and little bit more easy, right? More informed choice. Yes, questions please. So मेरा recommendation रहेगा, talk to your parents and get your career counseling done. If not with Paresh, with anybody else. Mine, as I said, career suitability report 300 rupees. It is 500, but for this purpose it is 300. For currently it is priced at 300. Only the assessment 3000. Quite comprehensive, quite descriptive, but no support given to you on any questions about the report. टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, माय टीम विल बी एबल टू आंसर यू. लेकिन इफ यू वांट टू आस्क के सर वो कौन सा लूं, दैट इज कंसल्टिंग. आई एम सॉरी, आई एम नॉट डूइंग एनी फ्री कंसल्टिंग, बिकॉज वो हाफ कुक्ड रहेगा. एंड यू सेड सर आपने तो ये बोला था. ऑफ हैंड में आपको कैसे बोलूं? आई हैव टू नो यू, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई कैन गिव यू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, राइट? प्रॉपर आपका क्या गाइडलाइन है वो मैं आधा काम करता नहीं हूँ. या तो पूरा करो या तो ना करो, राइट? फिर अगर आप लर्निंग का हो प्लस ऑनलाइन असेसमेंट
प्लस काउंसलिंग करना चाहते हैं तो द कॉस्ट इज 20,000. With 360 degree career guidance, the cost is 25,000. So in this, till the time your final exams results are out and your admissions are done, your career related queries will be answered by me personally, or maximum my wife. Nobody else will be dealing with this school. I have assigned people per school. But for Matrix Academy, Seema ma'am's request is that परेश सर आप और बीजल मैम कर रहे हो तो ही हमें मैट्रिक्स एकेडमी आपको सौंपनी है. बोला ठीक है. सो वी आर देयर विथ यू. तो आपका एडमिशन होने तक आपका काउंसलिंग जो भी क्वेरीज है वो सोल्व करके हम आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे. जैसे स्कोर मोर प्रोग्राम में एग्जाम खत्म होने तक आपके साथ में कनेक्टेड है इसमें, बट फिर उसमें स्कोर मोर का कोई सजेशन नहीं मिलेगा. और स्कोर मोर में करियर का कोई सजेशन नहीं मिलेगा. वो दोनों भी म्यूचुअली डिफरेंट है. थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, बट देन यू कैन नॉट रिलाई ऑन स्कोर मोर फॉर करियर गाइडेंस एंड करियर गाइडेंस फॉर स्कोर मोर. बोथ आर डिफरेंट गेम्स. एंड इफ यू टेक 360 डिग्री, अच्छा तो क्या होता है कि आपका असेसमेंट हो गया, आपने सबमिट कर दिया, आपका एक काउंसलिंग 1-1.5 घंटे का होगा, दूसरा क्वेरी सॉल्विंग सेशन आधे 1 घंटे का हो सकता है. देयर इज नो लिमिट. टिल द टाइम योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड वी विल हैव द सेशंस. 2 सेशन आपके ये से होंगे और इन बिटवीन अगर फिर फोन ज़्यादा क्वेरीज है तो शायद वापस एक आध सेशन करना पड़े, नहीं तो फ़ोन पे सेशन हो जाते हैं. जनरली क्या होता है कि पहले सेशन में क्लियर हो जाता है, बाकी के सेशंस फ़ोन पे चलते हैं. फिर आपका रिजल्ट आ जाता है ना जब भी एडमिशन प्रोसेस चालू होता है तभी, और या तो कोई मेजर क्वेरीज आ गई इन बिटवीन कि सर ये ऑप्शन है क्या करूं, मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका मैं फॉर्म भरूं कि नहीं एंट्रेंस का, तो उसके लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज द काइंड ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड विद करियर गाइडेंस टिल द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीट. क्वेश्चंस? ऋषित, लाइबा, रिद्धि, करिश्मा, श्रेया, प्रांजलि, तेजस, प्रिया, विशाखा, मृदुला. Please feel free to ask questions. I'm there. And if your parents want to know a little bit more about it and you want to have a brief session with me, half an hour session about career, you are free to do that. If you want to have session for career guidance and score more, साथ में बात करो मम्मी पापा के साथ में बैठ के, मुझे कोई वांदा नहीं है, मेरे साथ में बात करो. And after that also you make a choice of not participating, it is okay. Informed choice is always welcome than confused choice, right? Yes, any questions? I hope your time was worth it. सब सो गए क्या? खाली तेजस ही कम्युनिकेट कर रहा है. What about you, all of us? All of you. अनम्यूट करके बात कर सकते हो. All doubts are done. No doubts. Session was very good. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, welcome, Rishit. Shreya, thanks for appreciating the session. You can give your feedback to your friends so that next time when the school arranges something, you can. I'm recording this session, right? Okay, chat will be removed from that. So whatever you asked, whoever asked me the question, right? If people ask the question, right? तो वो चैट में निकाल दूंगा, so it won't be visible in the session. Okay? तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपने जो भी सवाल पूछे वो किसने पूछे वो छुपे रहेंगे. That is why I generally don't speak out the names of the people in public. Okay. Yeah.
one of the question is, I have an interest in psychology as a profession or a psychiatry as a profession, MBBS plus psychiatry. But when you are thinking of psychology as a profession, it is very short time before, by the time you become a psychologist, people would be seeing it as simple as going for a common cold to a doctor. जैसे यूएस में, यूके में, एवरीवेयर इट हैज कम दैट ओके आई हैव टू गो टू माय श्रिंक, मुझे मेरा काउंसलर के साथ में अपॉइंटमेंट है, एंड दे पे $500 पर आवर. $200 तो एकदम जूनियर साइकोलॉजिस्ट चार्ज करता है पर आवर, राइट. आई चार्ज ₹4,000 इन इंडिया. That is considered as a high charge per hour for students counseling. For seniors, I charge 6,000 to 10,000 depending on the work. But I am one of the high paid counselors. But in USA, it is, yes, one of the things, the question you have is that, do people really go for psychology counseling? How you present yourself? There are some psychologists, आप सक्सेसफुल लोगों को इसीलिए पूछना चाहिए कि does it actually happen? Yes, it does happen. People do go. Resistance है, धीरे धीरे resistance निकल रहा है, right? It's a challenge, but by the time you will be in profession, I think, because when I started, it was like पागलों का डॉक्टर है, और दूसरा कुछ काम नहीं मिला, right? But अभी तो how consistent you are in your performance, then people, अभी क्या हो गया, you will go and tell your principal, ma'am, you will give your feedback, they will, if you don't give, they will only ask कि आपको सेशन कैसा लगा, right or not? So you will say ना, so then my next year is also done ना, कि नहीं परेश सर का सेशन बहुत अच्छा था, हो गया. So that is how I get repeated business. अभी आप देखो ना, do people really go to counselors? They don't. See how many students in class 12? So many. How many are there? Not so many. How many students are in class 10 of matrix? More than 200. How many did actually come? 100. Right? That too because it was made as a compulsory attendance, and you will be marked, your presence will be marked. So probably many of the participants just logged in and never participated. But when there are 60, 80 participants in a batch, 50, 60 participants in a batch, it is very difficult to find out whether somebody is there or not. I don't know whether Karishma Raut is there or not, or Shreya right now is there or not. नहीं पता है, because your videos are not on, so I don't know. But only your chat is on, so पता चलता है कि कोई तो जवाब दिया. Almost everybody spoke something, chatted something or other with me. So क्या होता है? I know you all are there. मैं थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ. So क्या है कि one of the most important thing is how you present yourself. Even in this pandemic, I am doing pretty well as a professional trainer and a counselor and a coach. It's how you take it, how effective you are. So people would come to you if you are effective. Why would they not come? Yes, there was a taboo. Now the things are becoming a little bit liberal. Yes, so that was a good question. It is an excellent profession to be in. कहीं भी आप अपने flexible timing पे काम कर सकते हो. अभी तो online काम हो सकता है. You can consult people across the countries, across the borders, and receive the money online. There is no restriction on receiving the money. Yes, you realized a lot of interest. You don't have any career aim as of now. At least you have kept a lot of options open by going in science. Whether you've taken PCMB or PCM, you still have a lot of options. Commerce or arts, both clear hai, option hai. You should get into career counseling. I am an expensive coach. 5,000 रुपए में भी career counseling होता है. So if you find somebody reliable through the reference, if your budget is not there for 10,000, please do career counseling. Right?
So there is somebody who said that बहुत सारे interest है, painting, counseling, teaching, astronomy, IPS, then engineering was the most reliable stream in terms of money opportunities. ने वो गलत किया. खाली engineering is not reliable. The best engineer is reliable. There are engineers who are working in BPOs along with the BComs. Engineering नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप if you are doing fashion designing, then also it's a very good choice. Astronomy is a very good choice. Counseling is a very good choice. There is no bad choice as long as you are willing to give, as long as you are willing to give your 100%, as long as you are going to be 110% committed to what you are doing, you can be successful. But anyways, you are in science right now, and if you are thinking of engineering, engineering is a good choice, but I think because I know I could become a counselor after the age of 26. There is no age bar in your profession. After once you are a professional, you can switch, because then your reputation, your delivery makes a difference. If you are not going to go for a job, then whatever profession you choose, nobody can stop you. But still, if you really want to be sure about which one to pursue after your engineering, engineering is a good choice, but sincere karna hai. Make it your first choice. Second is your passion ka first choice. Or you can pursue 4 or 5 passions and see which one is the best for you. Then you focus on one. Rest of them can be used as recreational purpose. Right? So good question. I really am. So, and anything can be opted even after engineering. Yes, very much. After graduation, there are loads of option open. Science graduation के बाद में कॉमर्स इंजीनियरिंग वाले मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बट अदर वे राउंड नहीं हो सकता है. बीबीए वाले इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते. आपने सेफेस्ट चॉइस की है. द पीपल हु आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, दिस इज द सेफेस्ट चॉइस, साइंस, क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए अभी भी. और इफ यू केप्ट पीसीएमबी देन इवन मोर सेफर, बट it is wise to make that choice right now so that you can do well in your 12th and your preparation for admission can be fruitful. क्योंकि एडमिशन के फॉर्म्स वगैरह जल्दी चालू हो जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट्स के. ओके, सो इफ यू आर रिक्वायरिंग that particular kind of thing, then you should start looking at the colleges and the tests and application kabhi hai. So you can keep it as a bookmark and find out. Yeah. Okay. Questions, please. Any more questions? You can unmute and ask. No questions from Tejas. No questions from. लोग तो बोलते थे गुजराती भाई, तेजस इज गुजराती आई सपोज. गुजराती भाई तुम क्या कर रहे हो, ऋषित भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों पागल के धंधे में गए हो. प्रांजलि, वो 3 गुजराती है अभी इधर. गुजराती बंदा ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में कुछ बड़ा झोल है, लेकिन दिल तो पागल है. So choice is the most important thing. So give your feedback to your friends. So you will be in the group. तो ये ग्रुप का ये जो सेशन है ना, मैं
12th के ग्रुप में डाल दूंगा, ये इसका भी लिंक डाल दूंगा, so you can tell your parents to watch it as well if you want to, and you can many careers you have, you please go to the career library beta, lots of careers, but then there is a limitation in income in career language, right? But then passion hai to paisa milta hai. And one of the thing is IFS, Indian Foreign Service. Yes, thanks Karishma, you are most welcome. Indian Foreign Service, देन कॉर्पोरेट में ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़रूरत होती है. फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आप सीखे हो, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, मैंडरिन, चाइनीज़ मतलब जापानीज़, स्काई इज़ द लिमिट. एंड देयर आर ग्रेट इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई. या so one of your ex matrix person is French specialist. I keep on forgetting her name. She is in FY right now, but she did her French as per uska career guidance kiya tha, and she did her French first level and second level course from Kalina University right from 10th standard. After the 10th standard she started doing it. She did her 11th and 12th science from Matrix Academy. Only I think she is doing her BSc or something, because she was never interested in engineering or medicine. But then we decided that she's too young to travel and she needed to be in a school which is good at least. So they wanted to make her complete her junior college in a environment where she is comfortable. But she was traveling to Kalina on her own. I forget her name, but that's it. Yes, if there are no questions, we should end the session. Anybody wants to say something, you can unmute and say. You have already typewritten the questions. Okay. Is it wise to keep more career options open and work hard on what you are doing now, or give ourselves some time to choose a career? I have no doubt about it, and then put 200% in it, because then in every second of hard work should be towards our one and only goal without any confusion. See, that is exactly what plan A के ऊपर पहले focus करना है. You need to, all the options are anyways open, but plan A is your main option, right? So it is not wise to say that जो मिलेगा वो ले लेंगे. No. It is very unwise. Focus on plan A. Be ready for plan B, plan C, plan D, plan F. Yes. So plan A आपका actual plan A बनाना पड़ेगा. तो certain आप अपने आप को affirm कर लो और फिर लगे रहो मुन्नी बहन, लगे रहो मुन्ना भाई. Just in case of confusion, then you can think after 12th results, you still have a choice. You got into medical, but then you at that time you decide that नहीं मुझे नहीं करना है. You be very clear. वो टाइम पे tough choice करनी पड़ेगी. लेकिन अभी आपने जो भी हाथ में लिया है, if you are clear that it is something that is part of your choice, you should give your 100% right now. और अगर आपको डाउट है, then career guidance कर लेना जरूरी है, so that you know what is your number 1 choice, then number 2, then number 3, number 4. If you are uncertain, then go for clarity. And once you are clear कि इधर ही इधर जाना है, तो you will put in your 200%. I really appreciate your communication. एक मिनट. Yes, sir. Yes, बोलो. सर मैं थोड़े टाइम में फोन करूं, मेरा एक सेशन चालू है. हाँ बोलो. So good question. 11th में भी if you are कॉमर्स में भी अनश्योर रहते तो अनफोकस्ड काम होता है. 11th 12th वेस्ट हो जाता है.
अभी आपके पास तो क्या है, एक फोकस था सीईटी का, जेडब्ल्यू का या नीट का। अगर नहीं था तो डेंजरस है। सोचेंगे कभी? अभी से सोचना चालू करो कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद में जब भी एडमिशन लेने का है तब तक सोच खत्म हो जाए। उससे पहले ही खत्म कर लो तो फोकस एंड टारगेट हो जाएगा। यू विल नो विच कॉलेज, यू विल डू ऑल द रिसर्च एंड ऑल द हार्ड वर्क, सो एडमिशन विल बी वेरी इजी। यू विल नॉट मिस द बस एंड यू वुड नो दैट अगर वो कॉलेज में जाना है तो 92% पे लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, ये बार भी वही, तो आप 92% के लिए कोशिश करोगे। राइट? गुड। स्मॉल ग्रुप बट इंटरेक्टिव ग्रुप, आई लाइक इट। And as I told you, you don't need to come to me for career counseling, but at least go for career counseling. A reliable source to judge your path. मतलब आप अंधेरे में जा रहे हो यार, टॉर्च भी नहीं ले रहे हो, हाँ? I will wait for 1 minute for further questions. So at exactly 12:40, 12:39 on my computer, I'll close the session if there are no questions. And if you want to leave, you can leave in the meantime. Thank you for participating. Thank you for making this 1 hour and 39 minutes worthwhile for me. I learned a lot. Yeah. Yeah, you are welcome, Laiba. Oh, there is somebody. 1 minute. Huh? Okay, to be very frank, yesterday I was a bit confused either to attend this seminar or not, as it will cost half my Sunday. But now I am glad I did it. It was a wonderful experience. Thanks a lot for your valuable time. Oh, Bapre, itna zyada appreciation. Thank you, guidance and support. Thanks for answering my questions. I was clear about my choice, but my efforts weren't that fruitful. But now I will work hard and make it to it. Yeah. So very nice comment, Beta. Really appreciate you for that. You took a good time to say that. Yes, you all of you are welcome. We will be setting up uh, an appointment link for you if at all you want to discuss anything further. I'll be too happy to do that. Half an hour complimentary session rahega. No charges for it, but you need to take an appointment. I'll be sending the appointment link and you can choose the one that you feel suitable. But with that, in that appointment, I would not entertain only single students. I would entertain with the parent. At least one parent should be there. Right? Okay. So I'm ending the session. Thank you very much. Have a great Sunday. Wish you all the best. Please share about this session Thank you, with your sir. friends. Yeah, most welcome. Good day. Wish you all the Thanks a best lot, for your sir. life. Yeah. Welcome, all of you. I'm ending the session now with your permission.